something which was built by sun-dried bricks. So Egyptians used the bricks that were sun-dried, and the bricks that Indus Valley people used was burnt bricks. And this is a question that you may get. लेकिन 5000 साल पेपर, और तब पेपर इन्वेंट हुआ भी नहीं, फाइन, तो वो वाली चीज़ तो इसीलिए रूल आउट भी कर दी जाती है. बट मोस्टली वी कैन बिलीव दैट द ट्रेड वाज कंडक्टेड थ्रू बार्टर सिस्टम. सो ट्रेड था. क्या पढ़ा था लास्ट? याद नहीं. होमवर्क किया? So these are the ways in which the question can come. So the most crucial part for your prelims is this table that you have made, because from here you will find the number of questions quite, good in number. Now let us start with the features of Indus Valley civilization. So one thing that I have told you, that the characteristic of a civilization is what? Homogeneity. So whenever we are talking about the town features or the other features of the Indus Valley civilization, we are basically talking about the features which were common, which were more or less present, excuse me, which were more or less present across all the places. There were certain places with distinct features that you have done yesterday. So whatever the excess features that you have read about particular places, these are what? These are unique, or but they cannot be termed as that these were the features of the whole Indus Valley civilization. They can only be termed as that they were having presence over a particular place, but that doesn't mean that that was present everywhere. Fine. So we have discussed the okay. Now let us talk about the features of IVC. Now when we talk about the features of IVC, the first thing first, that is for which we call that as a civilization, and for which we call this as the first phase of urbanization in India. And when we are saying India, we're talking about a larger section. We are not just talking about the present political boundaries of India, we're talking about the whole subcontinent. So you can say that Indus Valley was the first phase of urbanization. And here, whatever features that we are going to discuss, they are all belonging to the mature Harappan phase. We have said three phases: early Harappan phase, mature Harappan phase, and later Harappan phase. So it was like a bell-shaped curve, that initially there were small pockets, gradually they developed. We saw the mature Harappan phase, whatever feature that we get belonged to the mature Harappan phase, and then there was a decline in the Harappan civilization. So we'll go accordingly. But here, because this was the first phase of urbanization in this whole region, we call this the most important feature is town planning. So the settlements that we find here, based on the evidences that we have, there ranges, there is a very diverse range of such urban and non-urban rural, range of these sites, which can be termed as urban, semi-urban, or non-urban or rural sites. And they vary both in size and in function. Like the sites that you have written, they are not all same. They vary in, like the cities are not all same. Even today, Delhi has a different function.
If we talk about the big cities, you'll say that there are like 8-10 major cities in this country. Fine. How many cities are there which are having a million plus population? Hmm. 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 You forgot your both neighbors, Chennai and Hyderabad. So roughly there are 51 or 52 million plus cities in our country. So every city has a different function. They have a different settlement. They have different size. Everywhere you will find some particular, especially when you see this belt of Ganga or the Indus and the Ganga plains. You will find that every city is characterized with its own speciality in a particular profession. In South also there are cities with having particular professions which are that is why now we have come up with in economics, you will read about this, but we have come with programs like one district, one product, because every district, every region has their own speciality. But when we are talking about the town planning, we will be discussing the features which were common everywhere, and that too in the mature Harappan phase. And mostly this description of town planning is based on the excavation of Mohenjo-daro and Harappa, because these were like the two major cities, you can say, that were found. So generally the city was divided into two parts. Town planning, the city was divided into two parts. Number one, the upper part, or the citadel. So voice is coming low. बेटा परिणाम देख रहा है, उसे देख लेगा. Fine. So the city was divided into two parts. The citadel was the upper part, and if we go for like a cross section, it can be the central part which was elevated. The central part, or not exactly the central part, but yes, it was the elevated part of the city, and around which, or in a semicircular or a circular pattern, the city was, or maybe in elliptical pattern, you will find that the city was settled. Fine. Then, so citadel, it was something like this. You can imagine it like this, something like this. So this is your citadel, and this is your lower town. Citadel and downtown or lower town. Fine. So it is believed, because we have not deciphered their scriptures yet, we are there to decode their language, their script. We have made certain assumptions that the prominent and the elite class of the city, based on the size of the buildings and the structures that we find here, based on that we can say that the elite or the prominent persons of the city could have been living there, and general public, because the building structures, the houses were relatively small as compared to this. They were more or less of similar pattern. So we believe that this was the period where these people would have been living accordingly. Fine. Okay. Then yes. So we can say that the citadel or the Acropolis, which was found in the major cities like Harappa and Mohenjo-daro, there the ruling class, it was occupied by the members of, and this lower town was having brick houses. This lower town was having brick houses, and when we say brick houses means we believe that it was inhabited by common people. It was a similar kind of structure. Fine. The most remarkable thing about the lower town and the arrangement of houses was arrangement of grid pattern. Was the arrangement of grid pattern. What is this grid pattern?
Yes, generally you can say that, yes, it's like this. So these are all roads. Fine. And what you will find is, let's say these are all your houses. Like this. Fine. So these were all, this is the grid pattern that we found here. And based on the arrangement of the houses. So, and the good thing about the system was that roads intersect each other at right angles. The roads intersect each other at right angles. Okay. Mostly, जो citadel we found, the citadel here was there. It was a fortified. The citadel that we found here, mostly it was what? It was fortified. The exception is Chanhudar. There we did not find a fortified citadel. In Chanhudaro, there was a kind of open citadel, but mostly the citadel was this. Achha, when we talk about the houses, the brick houses and the houses that were built, especially in the downtown, private wells. So the structure of the house was something like this. Let's say this was the entrance. Okay, then you reach here. Fine. Fine. So there it used to be rooms, and here was the central courtyard, which was open. Mostly in South India, you will find such structures of houses even today. So you enter, and that entrance is very narrow. That entrance is not huge. Narrow entrance that directly leads to the open courtyard. And then around that there is a kitchen. Room and everything is there, and that open courtyard is usually the hall. Yeah, it is the center of all daily activities. Yeah. So this was the structure of houses that we find here. Now there are multiple reasons that we say that there is a possibility that they may have been pushed down. Fine. Okay. So they have this kind of thing. Apart from that, every house has its own private well here. And ventilated bathrooms. Fine. Apart from that, another very unique feature of this town planning and settlement was the drainage system. Was the drainage system. Actually they had a very advanced drainage system. So every house had a drainage because they had bathrooms and wells, so of course they must have a drainage. That drainage was, connected to a sub-drain. Let's say here there was a sub-drain. Let's say, fine. This sub-drain was connected to main drain. All the main drains of the roads, they were all connected to one larger drain which was having its outlet outside the city. And all the drainages were covered. There were manholes at some distance basically for the cleaning purpose, and they were well you can say the slope and everything was very well. That was a very marvelous example of engineering that was there.
ठीक है. क्या हो, इसमें ठंडा पानी ला देना, इसी में ऐड कर देना, पानी मत फेंकना. One general misconception that we may have, or you may have, that if they were the people who were living almost 5,000 years ago from today, they were ancient, but they were not backward. Being ancient is fine, because of course they were living 5,000 years earlier than us. Roughly there is a gap of 15-20,000 generations between us and them. But they were the people who were way more advanced than us. They were not like us. हम आज के दौर में क्या करते हैं? हम पहले शहर बनाते हैं, शहर बनाने के बाद याद आता है ड्रेनेज तो बनाया ही नहीं, फिर हम पूरा शहर को जो है धूल में कर देते हैं. अरे whole India, tell me one place where this is not a problem. Water logging and all these things are not a problem. है ना? So अच्छा, जब हम ड्रेनेज बना देते हैं तो फिर रियलाइज होता है कि ओह, ड्रेनेज बननी थी विच शुड हैव बीन लेट्स से ऑफ 10 इंचेस, बनी कितनी 5 इंचेस. तो वाटर लॉगिंग हो रहा है. उसके बाद रियलाइज होता है, फिर बनाते हैं, फिर शहर को आधे को शहर को खुदाई कर देते हैं, फिर पता चलता है अच्छा स्लोप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. ये भी होता है कि ड्रेनेज बनने के बाद रियलाइज होता है कि स्लोप तो उल्टा बन गया, ग्रेडियंट सही नहीं बैठ पाया, फिर काम करेंगे, फिर 10 साल 5-6 साल वो चलेगा, फिर उसमें वाटर लॉगिंग होने लगेगी, फिर पता बोलेंगे कि अरे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, सो द विड्थ ऑफ दिस हैज़ टू बी इंक्रीज्ड. नाली का चौड़ीकरण, यही तो होता है. एंड सी द स्ट्रक्चर दैट दे हैव डिजाइन्ड स्टेड फॉर 5,000 years, surviving almost everything. The humans may have survived. अरे आज ऐसा वो नहीं है, इकोनॉमिक क्लास में आता है. बिहार is an example where we saw that the bridges which are like what? I leave bridges. See this Pragati Maidan tunnel. It was inaugurated with all pomp and show. And as बारिश हुई, the tunnel is closed because of water logging. उसमें कुछ हो गया, उसमें कुछ हो गया. Then who are more advanced? Us or them? हमारे 10 साल ब्रिज नहीं टिक पा रहा यार. I was looking for a bridge news in Ahmedabad. So that bridge was constructed, I think, I don't remember the exact figures, but it was like, it was constructed at a cost of 22 crores. No, flyover bridge. So flyover was constructed at a cost of 22 crores and the contractor had given, they have to certify that how long your structure will, So he gave a certification of 50 years. 5 years later, they have to demolish it at a cost of 45 crores. Still, I know there are, अब तो खैर multiple bridges बन गए. Still remember, भोपाल से आगे जाओ. So when you go across Indore, then by road, then you'll cross river Narmada at 2 or 3 spots. अच्छा, so there was to be a small, मतलब छोटा सा एक ब्रिज था, ब्रिक ब्रिज जो आर्चेस वाला जो ब्रिज नहीं होता है वैसा था. तो बचपन से, सो माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी दैट दिस ब्रिज वॉज बिल्ड बाय हर अंकल हु वॉज एन इंजीनियर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट. फाइन. और वो उसके चीफ इंजीनियर थे. एंड समवेयर इन 1900 or so, because he was the chief engineer of that bridge, and he guaranteed that it will last for 100 years. Fine. आज भी वो ब्रिज चल रहा है. एंड मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपेंड दैट मेन ब्रिज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो यूज हो रहा होता है. There is a similar bridge in it is on Tungabhadra river, and that bridge was built by Sir Vishweshwar.
in the British time. Hmm. So क्या हुआ? When I was in 8th or 9th standard, there was a small crack in that bridge, and the government thought, okay, this bridge is almost 100 years old. We have to build a new bridge. तो उसके पैरेलली दूसरा नया ब्रिज बना दिया। वही होता है। अब जो नया ब्रिज है उसमें क्रैक आ गया। ये ब्रिज एज इट इज है, उसको कुछ नहीं होने वाला। यू सी दैट दिस ये एक तो मिंटो रोड वाला ब्रिज है, और एक इधर से जाओगे कभी रिंग रोड से जाओगे, देन यू गो व्हेन यू गो पैरेलल टू द रेड फोर्ट, देयर इज अ बैकयार्ड ऑफ द रेड फोर्ट। अच्छा, वो पहले ब्रिज जो था ना, वो बनाया गया था बिकॉज जब यमुना का वो नेचुरल फ्लो होता था, वहाँ से यमुना किसी दौर में बहती थी, सो टू क्रॉस द अदर साइड यू हैव टू यूज दैट ब्रिज। आज उस ब्रिज पे से ट्रेन गुजर जाती है। They have constructed a railway bridge over that. ट्रेन गुजर जाती, कुछ नहीं होता। So this is something which we need to go for self introspection, that what exactly we are doing. इतने बड़े बड़े summits होते हैं, इतने बड़े बड़े expos होते हैं, for what? So that our bridge don't last even 5 years. तो ब्रिज चोरी हो जाते हैं। मतलब this is something which no one can even imagine in its wildest dreams that this may happen. खैर, so they had a drainage system जो तब था, अब तक है, वो आज भी है। Let's say in its physical form it do exist. Fine, and it has survived 5,000 years. See the quality of bricks, because the bricks that they used were burnt bricks. On the contrary, the contemporary civilization was Egyptian civilization, where we talk about the pyramids and the big Egyptian structures. That was something which was built by sun-dried bricks. So Egyptians used the bricks that were sun-dried, and the bricks that Indus Valley people used was burnt bricks. And this is a question that you may get. Fine. One exception of settlement, fortified settlement, was Chanhudaro, where the citadel is not fortified. On the contrary, when we see settlements like Dholavira and Lothal in Gujarat, their entire settlement is fortified. So there used to be walls, there used to be a concept of walled cities with 4 entrances. With 4 entrances. जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट. So this was the gates of the old walled cities, walled city of Shahjahanabad. The Kashmiri gate or Ajmeri gate or Lahori gate. तो ये जो सारे थे, उस डायरेक्शन में, if you have to go in this direction you go. हाँ, तो वो आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा। फिर सब जगह यही था, जहाँ पर ओल्ड सिटीज़ आपको दिखेंगी, उनका कंसेप्ट ये था कि सिटीज़ जो बनी वो वॉल्ड सिटीज़ होती थी, फोर्टिफाइड सिटीज़ होती थी, एंड दीज गेट्स यूज्ड टू बी द चेक पोस्ट्स। यहाँ से फिर आप एंटर करते थे या एग्जिट करते थे, जिस डायरेक्शन में जाना होता था। सो लाहौर, कश्मीर, अजमेर, और क्योंकि शाहजहानाबाद था तो उसे दिल्ली गेट करा गया, फिर दिल्ली की तरफ जो जाता था। शाहजहानाबाद वाज अ न्यू सिटी। ओके, सो but Dholavira and Lothal are the exception for what? That the whole settlement was fortified. At other places it was only the citadel which was fortified. Chanhudaro is an exception, जहाँ वो भी fortified नहीं था. Fine. Then when we talk about this, Achha, which was the largest site of India until the discovery of Rakhigadi?
Yes. Okay. What was my question? Was the largest site discovered before Rakhi? Which was the largest site in India? Of course, largest site is Mohenjo-daro. Rakhi was discovered later. But my question is, which was the largest site of India before the discovery of Rakhi? Banavali, Lothal, Kalibangan और धोलावीरा. सर उसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, सही बता रहा होगा. Yes, it is Dholavira. It's the largest site before the discovery of. Yes. अरे इस संडे का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा किसी ने? नहीं. इंडियन एक्सप्रेस का जो सप्लीमेंट आया ना, अगर कोशिश करो मिल जाए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा. There's a whole article on John Marshall and R.D. Banerjee. It's whole full page article on this one. Explain में नहीं, आई में. सर वो तो हम देखते ही नहीं. हाँ. Okay. अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, वर देयर पैलेसेस एंड टेम्पल्स? नो, देयर वर नो सच बिगर स्ट्रक्चर्स एट पैलेसेस एंड टेम्पल्स. बट वी फाउंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स लाइक द ग्रेट बाथ, and greeneries. Great bath and greeneries. So great bath and a pillared hall was found at Mohenjo-daro. A dockyard was found at Lothal and greeneries were found at Harappa. Now these are like unique features, but a great bath in itself is a very important aspect of this whole Indus Valley civilization when we talk about, because it was more like a swimming pool surrounded by smaller rooms. Call them changing rooms. We can call them, na? So today also we have the same concept. हो सकता है हमने ये concept वहाँ से derive किया. I'm not denying the possibility of that. I'm not denying the possibilities of that. Okay. अच्छा, okay, no doubt, the Great Bath. अरे टेल मी वन थिंग, आसपास कोई शॉप है जहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएगा? रोड के ऑपोजिट एक बिल्डिंग है. किधर? ये जो गुरु नानक मार्केट? नहीं, गफर मार्केट नहीं, ये जो बड़ा बाजार रोड जाता है उसके ऑपोजिट एक. हाँ, दैट इज गुरु नानक मार्केट. वहाँ मिल जाएगा. ठीक ठीक ठीक, बट थैंक यू. Got the point. Fine. Okay. The Great Bath is the most notable feature of Mohenjo-daro.
The Great Bath is the most notable feature of Mohenjo-daro. The discovery reveals that, after full stop, the discovery reveals that the Great Bath, which was located within the city, was a huge rectangular tank used for special rites or ceremonial bathing. Used for special rites, RITES, RIOTS मत लिख देना. Special rites or ceremonial bathing, and resembled a modern day swimming pool. Its dimensions were 39 by 23 by 8. So it was 39 feet long, 23 feet wide, and 8 feet deep. Sir, instead of saying ceremonial, social, The NCERT says ceremonial. अपने देखो, हाँ, it's fine. Your question is very valid. It's a very valid question that can't we call it a social gathering? But sometimes it happens that social gathering may result into what we call as today's pool party. That is also social gathering. Fine. But it happens that whenever we want to talk about our ancestors, whenever we want to talk about the deities and the gods and the prophets, we try to ignore certain things which we actually feel should not be highlighted. So gradually we try to create a all good picture in this. So we say that is a ceremonial bath. The walls of this Great Bath, the outer walls, they were like 8 feet thick. So that was there, and then they had these rooms which were there, and to prevent the leakage, there were two things. There was a proper drainage system where all water can be drained out of that, and that was more like a corbelled ceiling which was like 6 feet below that, and through that water was drained out. And to prevent leakage, this whole structure was covered with gypsum. This can be a question. So इसकी जो covering थी वो किससे थी? हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं. We're talking about something which was like 5,000 years old. Then another important structure that was found at Harappa and Mohenjo-daro was the granaries. So 47 by 15 meters. यहाँ meters में है बात. And granaries are the biggest structure found, of course, 47 meter long and 53 meters broad. It is the biggest structure at Mohenjo-daro. Fine. So हरप्पा में भी ब्रिक प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिसके ऊपर ग्रीनरीज थी, कालीबंगन में भी मिलते हैं. तो हम इसको एक जनरल फीचर मानते हैं किस चीज का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का. फाइन. सो अच्छा, हाँ, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं वो कुछ आधे सी ग्रीनरीज मिलती हैं. मीन्स द लोअर पार्ट, लेट्स से अप टू पार्ट
it was made up of bricks, but the upper part was made up of wood. This is what we believe. Acha. We find this, हमने लिखा ना pillared hall. So this pillared hall was like 80 feet by 80 feet. It was huge. 80 feet by 80 feet का एक pillared hall मिलता है. Possible है वो public gathering के लिए use होता होगा या public meetings के लिए use होता होगा. Because the problem is we can only make assumptions. Based on what? Based on the evidences that we have today. Fine. There were public wells also. Okay. There were public wells also, which were there. Achha. Achha, in Mohenjo-daro we find only one granary, which is like the structure that I told you, 150 feet के आसपास का उसका वो था. But there were 6 granaries that were found in Harappa. The number of granaries were more in Harappa. Fine. Okay. From here, so this was largely about the town planning and structure. Now, if we talk about the economy during, or before economy, let us talk about the society and religion. Okay. Can we question the or this can be a questionable thing, that whether the technology that was used to build such massive structure was indigenous or it was imported. This is also one thing that we don't have, because another side of the world, in Egypt we also find massive structures. Egypt में उस दौर के structures, they are like actually massive, big. But when we talk about the religious belief of these people, they worship both male and female deities. First thing first. Was there worship? Yes. So they worship both male and female deities, and most likely that they would have been worshipping Mother Goddess. They would have been worshipping Mother Goddess, or they also worshipped a male deity which we believe to be Pashupatinath or Proto-Shiva. Pashupati or Proto-Shiva. Pashupati as in the lord of the animals. Pashupati means the lord of the animals. And the most unique structure that we find of this is in a seal, the Pashupati seal, yes, where he is the deity is represented sitting in the position of a yogi, and kind of meditation that he is carrying out. Fine. Okay. So apart from that, they would have been worshipping animals. It is possible that they would have been worshipping animals because the seals that we find, they have the presence of bull, serpent, goat. Most used animal was bull and the something like a rhinoceros kind of animal. Yes, rhinoceros जैसा जो है वो use होता था. Fine. So this Pashupati, the deity who is sitting in the position of a yogi, like he is meditating, he is being surrounded by animals, that is Likhlo. Male deity, that is Pashupati Mahadeva or Proto-Shiva. Male deity, that is Pashupati Mahadeva or Proto-Shiva, is represented having 3-horned head
is represented having possibly a headgear, a three-horned head, and is represented in sitting posture of a yogi, and is represented in sitting posture of a yogi. Surrounded by an elephant, tiger, rhinoceros, and buffalo. Surrounded by elephant, tiger, rhinoceros, and buffalo, and 2 deer at his feet. And 2 deers at his feet. Full stop. The people of Indus region also worshipped trees, mostly people. The people of Indus region also worship trees. People का पेड़ की वो करते थे. Fire, आग की पूजा करते थे. And animals, that is unicorn, humped bull, etc. They also worship fertility symbols. They also worshipped fertility symbols like round stones and perforated stones. Like round stones and perforated stones. Which predated the worship of Shiva and Parvati, in the form of phallus. So basically they used to worship the phallus because they believe and why they worship nature? Because they worship the goddess of fertility. Fine, so they used to worship this. Further, note down. They might have believed in magical rites. RITES, charms, as well as ghosts and demons. They might have believed in magical rites, charms, as well as ghosts and demons. And used amulets against them. Overall, you can say that because हमें burials के भी evidences मिलते हैं और आपने जब cities जो sites के बारे में पढ़ा होगा वहाँ आपने देखा होगा आपको fire altars भी मिले हैं. So हमें burials भी मिलता है और cremation के भी evidences मिलते हैं. This shows that can we say that Harappan civilization was a secular civilization? By and large, yes.
As far as based on the evidence is concerned, we can say that these were all yes. Okay. Acha. Then when we talk about society as such, so this was about the religion. When we talk about the society, possibility is there that hierarchy may have existed in the urban habitation, and ये हम किस basis पे कह रहे हैं? Based on the planning of the town planning and the structures that we have found in that urban urban places, there may have been some hierarchy where maybe the rich or the elite class may have been living in the grand structures which were in the citadel, and the general public, the common man, would have been living in the lower town. Fine. Acha. Apart from that, when we talk about the social life, okay. Of course, if there was the presence of hierarchy, is there a possibility that there may be some political authority over that? Because if we say that there is hierarchy, there must be someone who has decided and agreed upon, people agreed upon that, on that hierarchy. So yes, there was a political organization. So we can say that the idea of state, or maybe city-states, we don't know the exact, but the idea of state or city-states was there in the no. So, and all the houses were not similar. We found similar houses with different structures. It shows that yes, possible that the sizes of house was a representation of the social structure, social system that, or the social classes that would have exist. Possibly the merchants would have to be living in the bigger houses, and the artisans and the farmers might be the common people. Of course, farmers would have been there, because if there were big granaries, means there was a surplus food production. Acha. It would not be wrong if I say that the people of Indus Valley were fashion conscious. They were very much fashion conscious, more than us. Because we find a large number of ornaments, that is necklaces, armlets, finger rings, bangles, made up of gold, ivory, silver. Fine. So that has been found. Bangles, Kalibangan. So there was a whole bangle making structure. No, that whole thing has been found in this region. So yes, they were a very much fashion conscious people. Okay. Necklaces, fillets, armlets, finger rings were worn by both men and women. But bangles, girdles as in waist girdle, कमरबंद जिसे कहा जाता है, चांदी का जनरली होता है. So bangles, girdles, anklets and earrings were worn by women only. So necklaces, fillets, armlets and finger rings, it was by both men and women. On the contrary, bangles and girdles and anklets and earrings, it was only for women. Fine. So this was about their. Acha. What they would have been doing for recreation, entertainment, and हाँ? उसके अलावा तुम तो वहीं अटक गए. Yes, very good. Dancing, because we find that bronze dancing girl. Fine, very good. Or chess भी मिला है, dice भी मिला है. So there were games like this. They would have been doing indoor games, and a great quantity of terracotta toys have also been discovered. So there is a possibility that. So this was their social and religious life. There were no temples. So if I say there were no temples,
So who would have been dominating the society, the priestly class or the merchant class? Merchant class. Yes, this is also another question that you can get in examination. कि डोमिनेट कौन कर रहा था? डोमिनेट मर्चेंट क्लास कर रही थी, क्योंकि हमें टेम्पल स्ट्रक्चर तो मिलते नहीं हैं. अगर टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं, इसका मतलब प्रीस्टली क्लास हो नहीं. प्रीस्टली क्लास थी, पॉसिबल है थी, लेकिन वो डोमिनेटिंग नहीं. वी कैन नॉट डिनाई, completely deny the presence of priestly class, but we can say that yes, they were present, but they were not the dominant section of the society. Now, if we talk about economic conditions, if we talk about economic conditions, so largely this economy was built on animal husbandry and agriculture. Largely it was built on fine. And third thing is you can say, you can add third thing, and that is trade. Add kar lete hain isme. So if you say that the major economic activities were agriculture, trade and animal husbandry. Okay. The main crops were राइस था ही नहीं. एक या दो जगह एविडेंसेस मिलते हैं, बार्ले एंड व्हीट. द मेन क्रॉप्स वर व्हीट एंड बार्ले. जो होता है वही तो खाएंगे. चावल की कल्टीवेशन के लिए पानी बहुत चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या एग्रीकल्चर की बात हो रही है, मेन क्रॉप्स, फूड नहीं. हाँ, मतलब मीट की बात मत करो अभी. फाइन. So apart from that, other crops were, no doubt, dates, mustard, sesamum, yes, sesamum, cotton, and rather we are the first people to cultivate cotton. कहाँ मिलता है एविडेंस? किस साइट पे मिला the possible evidence of cotton cultivation? ठीक है. पाकिस्तान में कॉटन नहीं होता. मेहरगढ़ इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट साइट जहाँ पे हमें कॉटन कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है. सो वी वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन. और ग्रीक सिविलाइजेशन जो है हमें सिंडन कहता था, बेस्ड ऑन द कॉटन. वी वर द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड. फाइन.
राइस बिल्कुल एब्सेंट था? नहीं, राइस कल्टिवेशन was involved but at separate centers. It was not something which you can say that was present everywhere. So this can be another question. Exceptions पे ही question बनेंगे, पता है? Fine. If we talk about domestication of animals, sheep, goat, buffalo, they were domesticated. Sheep, goat, buffalo, oxen, bulls, fine. Camels. हाँ, अब मुझे पता था ये सवाल हर बैच में होता है ये सवाल. हम ये मान के चलते हैं कि काउ वॉज, ऑफ कोर्स यार, अगर ऑक्सन है तो काउ भी होगा. हो सकता है वो सिग्निफिकेंट ना हो. एविडेंस नहीं मिलना, हमने एविडेंसेस किस बेस पे किए? जिस पे सील पे मिल गया. बोन्स पे भी है, लेकिन हो सकता नहीं मिली. तो ये कहना कि काउ वॉज एब्सेंट इज नॉट राइट, क्योंकि उसका मेल मिल रहा है, उसका एविडेंस मिल रहा है. If we're saying oxen was there or bull was there, तो काउ तो कहीं ना कहीं अब बफेलो है तो they belong to the same family ना, तो काउ तो है, लेकिन काउ सिग्निफिकेंट नहीं. जैसे अच्छा, आज के दौर को अगर कोई ढूंढेगा तो सबसे बड़ा, उसको लगेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल जो है दिल्ली में सबसे बड़ा एनिमल जो है वो लायन होगा, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज लायन कैपिटल दैट इज बीइंग प्लेस्ड ओवर द पार्लियामेंट हाउस. लायन इतना इंपॉर्टेंट था और 4 एनिमल उसके अराउंड है, तो वो कुछ होंगे पॉसिबल. लेकिन फिर वो कहेगा कि जैसे ही आप नदी पार करते हो आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिफेंट. वी गो टू द नोएडा, दैट क्या कहते हैं उसे, दलित क्रांति स्थल, राष्ट्रीय दलित क्रांति स्थल. सो देयर लाइक सीरीज ऑफ एलिफेंट्स. फाइन. तो नदी के इस तरफ आपको क्या मिला, यमुना के इस तरफ आपको सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है शेर का. ये व्हाट इज दिस, क्लास के बीच में आके दरवाज़ा खोल के और जो है वो देख के चले जाते हैं. हाँ, ये लोग नहीं, अभी कौन दिखाने आया था? हाँ, उनको क्लासरूम दिखाना बोलना, वो वाला दिखा दो ना, बाहर से. अंदर तक आने की क्या जरूरत है? डिस्टर्ब होता है. और वो उनको यही नहीं पता, मुझे लगा डेमो के लिए आया, वो आके बैठ भी गया लड़का. तो अपने सुनो, गया ये पानी गर्म होने में टाइम लगता है, ये तो सुना था. ठंडा होने में कैसे टाइम लगता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया. तो ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो कोई 4-5 हज़ार साल बाद हमें ढूंढेगा तो क्या पाएगा? दिल्ली की बात करते हैं, चलो दिल्ली मिल गया किसी को, दिस होल एनसीआर रीजन मिल गया, ठीक है. तो उसको क्या दिखेगा कि जब एनिमल्स की बात आएगी तो बोन्स, चिकन बोन्स तो हर जगह मिल जाएगी. मिल जाएगी ना. फाइन. तो मोस्ट प्रेवलेंट एनिमल बर्ड जो है वो चिकन हो जाएगा. लेकिन एनिमल्स लाइक लायन एंड so they will say that there was a river and on the eastern side of river there was the prominent animal was elephant, because वो पूरा दलित क्रांति स्थल में जो हाथी लगे हुए. लेकिन जैसे आप इधर आओगे तो आपको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके ऊपर 4 शेर लगे हुए. They will say that this lion was the most important animal here. और हो सकता है वो ये इंटरप्रेट कर दे कि ये नदी के इधर दूसरा किंगडम था, नदी के इधर दूसरा किंगडम था. Who knows, मतलब what we don't know ना, what they will interpret. हमने भी तो कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन किया ना. फाइन. फिर वो कहेंगे साउथ दिल्ली was more ritualistic because there were a lot of great baths present in South Delhi and Gurgaon. So this is all based on interpretation. हाँ, अच्छा, अब लेकिन क्या बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको दर्शाया नहीं गया, उनका सिग्निफिकेंस नहीं है किसी उसमें,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट है या वो है ही नहीं. They do exist, but for example, we cannot say that like horses. So horses were present, but the system of domestication was not horse-centered. The system of domestication was not horse-centered, but सुरकोटडा में या लोथल में या मोहनजोदारो में हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं. था, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो अगर हमें नहीं मिला है तो वो था ही नहीं. ये वाली चीज़ हम नहीं कह सकते. अच्छा, हंटिंग हो रही थी. Yes, hunting was going on because we found pictures and some crafts which represent hunting. So hunting, yes, hunting was going on. Fine. सर ये entertainment purpose से जो आपने बात करी थी उस पे एक स्टेडियम भी आ सकता है. सर धोलावीरा में स्टेडियम. हाँ, धोलावीरा में स्टेडियम पॉसिबल. कुछ ग्लैडिएटर वगैरह की लड़ाई होती हो जैसे वो उसमें होती थी रोम के कोलोजियम में. पॉसिबल ना. मतलब देखो, ये कहानी तब तक है जिस दिन किसी ने उनको डिसाइफर कर दिया कि इसका मतलब ये है. अब वो होगा नहीं. आई डोंट थिंक सो. अब तक नहीं हो पाया तो हम तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे एडवांस दौर में जी रहे हैं ना. अब इससे ज़्यादा क्या एडवांस हो जाएगा. दैट व्हाट यू थिंक इज अपियरिंग ऑन योर स्क्रीन. आई फेल्ट दैट व्हाटएवर यू थिंक, इससे ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं हो सकता ना. फाइन. इसके अलावा यही हो सकता है कि शहरों में जो है एयर टैक्सीज चल रही होंगी, उसमें भी ट्रैफिक जाम लग जाएगा. सही बता रहा हूँ. दिल्ली एनसीआर में तो उसमें भी एयर टैक्सीज भी चलेंगी ना, उसमें भी ट्रैफिक जाम लग जाएगा. फाइन. वर दे अवेयर ऑफ व्हील? व्हील, यस. पॉटरी हो रही थी तो व्हील्स था. व्हील कार्ट्स भी थे, बुलक कार्ट्स भी थे. तो दैट वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फाइन. टॉयज भी मिले हैं बुलक कार्ट्स के. तो व्हील वाज, दे वर अवेयर ऑफ द यूज ऑफ द व्हील. एंड इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट दैट दे वर यूजिंग, they were very well acquainted with copper, gold, silver and bronze. Metals that were known to them were copper, gold, silver and bronze. Iron was not known to them. Iron was not known to them. Goldsmiths, note down. Goldsmiths, brickmakers, stone cutters, goldsmiths, brickmakers, stone cutters, weavers, boat builders, boat makers, remote.
Okay. क्या लिखा हमने? Brick makers, board builders, and terracotta producers. Terracotta producers were among the specialized groups of craftsmen. Were among the specialized groups of craftsmen. Acha. If we talk about art, because we are talking about trade and craft, they were aware of metallurgy and the technique that they used was called as the lost wax technique. Was called as the lost wax technique. क्या होता है? ठीक है, ठीक है, yes. So what they used to do, first they used to make the statue or whatever art they want to make, that is made up of wax. Once it is made of wax, they used to cover that whole structure with mud, clay, and it's a mixture. Fine, and it is allowed to dry. Once it is dried, then it is heated. While making and covering that with mud, what they used to do, they used to leave a small hole in that. So what happens when it will get heated up? The wax will melt. It's gone. That is why the wax is lost. And in that, from that hole, what they will do now, they will pour molten metal into that and allow it to settle down. This is how they used to make whatever the craft that we talk about. Fine. So lost wax technique was used. What we have find is the human and animal figures. We have find a dancing girl in a tribhanga. Dance पढ़ा होगा art and culture में? Yes, the tribhanga posture. वो posture है जो dancing girl का. That is the tribhanga posture that you have found. Then we have found the statue of a bearded man. Statue of a bearded man. Most accepted interpretation of that is that of a priest. The most accepted interpretation of that is that of a priest. Fine. Then we find a figure of male torso. Fine. Which is in Harappa, and that is made up of red sandstone. Red sandstone. Fine. Okay. Okay. Was there money in circulation, metallic money? Not found. Anywhere you read about coins? No. So there was no coins. या तो हो सकता है पेपर करेंसी हो और वो गायब हो गई हो क्योंकि सील्स मिलते हैं. फाइन, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई इसका एविडेंस है नहीं कि पेपर करेंसी एग्जिस्ट
या कुछ किसी तरीके का प्रॉमिसरी नोट या कुछ इस तरीके की चीज़ एग्जिस्ट करती हो सकती है, लेकिन 5000 साल पेपर, और तब पेपर इन्वेंट हुआ भी नहीं था, फाइन, तो वो वाली चीज़ तो इसीलिए रूल आउट भी कर दी जाती है. बट mostly we can believe that the trade was conducted through barter system. So trade tha, yes. What they were using used as barter system. Fine. No doubt. Trade and commerce. Trade and commerce. Archaeological evidences shows that inter-regional as well as foreign trade existed at that time. Sumerian text refer to trade relations with Meluha, refers to trade relations with Meluha, the ancient name given to Indus region. They used boats and bullock carts for transportation. They have established two intermediate trading stations. First at Dilmun. In Bahrain. And Makan at Makran coast. Major exports included agricultural products, cotton goods, terracotta figurines, beads is how that small colorful stones and those things. Beads, shell, conch shell, that's ivory products,
copper, etc. Imports, full stop. Major imports included gold, silver, copper, tin, jade, Jade, and steatite. It's a stone. It's ऐसा kind of looks like a spongy but very hard stone. That's puffy grey color का जो होता है ना, that steatite. Okay. एक चीज और देख लो, इंपोर्ट सोर्सेज, कौन सी चीज कहाँ से इंपोर्ट हो रही थी. तो वी आर अ नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड सिंस लास्ट 5000 ईयर्स. बीच में एक टाइम आता है जब हम मतलब हमारा जो गोल्ड है वो बहुत सरप्लस हो जाता है, स्पेशली व्हेन द किंगडम्स ऑफ साउथ विल इवॉल्व. वो जब ट्रेड करेंगे तो हमारे पास गोल्ड तो होगा नहीं, तो वो कहेंगे हमें करेंसी में मत दो, हमें गोल्ड में दे दो. सो दे स्टार्टेड टेकिंग पेमेंट्स इन गोल्ड. सो दैट इज व्हाई साउथ इज रिच ऑफ गोल्ड. I'll give you one interesting fact, that leave the gold which is in the temples. There's huge gold in temples. There's huge quantity of gold today. But the golds that we have in our household gold, is more than the total gold reserves of IMF. जो सोना हमारे घरों में रखा हुआ है वो लाल बक्सों में बंद, if you club that, that is more than the gold reserve of IMF. And here I'm not talking about the gold reserves of RBI, and leave that, I'm not talking about the gold reserves which the temples hold, especially in South India. हाथ भी नहीं लगाने देते, क्यों? टेम्पल ट्रस्ट छूने भी नहीं देता गवर्नमेंट को उसे. और अगर कभी ना कभी कोई ना कोई गवर्नमेंट आएगी जो उसको टारगेट करेगी. देखो, रिलीजियस जितनी चीज़ें हैं ना, अगर आप उसको फेयर, फॉर एग्जांपल वक्फ का इशू चल रहा है, वो भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा अगर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल इंटरफेयर एंड पहले वैसे होना चाहिए. वो अभी से नहीं, वो तो ज़मानों से है. टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट करप्ट हो जाएगी. टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन तो उसे ओन कर रहा है ना. नहीं, आई एम नॉट सेइंग एवरी टेम्पल इज करप्ट, नो, बट यस, मेनी टेम्पल्स आर नाउ, दोनों साइड, दोनों वर्जन है. बहुत से टेम्पल ट्रस्ट ऐसे हैं जो, लाइक इफ यू सी दिस तिरुपति बालाजी जो ना अभी न्यूज़ में है, व्हाट कुड बी द नेट वर्थ ऑफ दैट टेम्पल ट्रस्ट? मोर देन 5000 को बहुत छोटा बता दिया है. मैं बहुत लोअर मार्जिन लेके चल रहा हूं. और वो लड्डू पे जीआई टैग है. It has a GI tag. Yearly revenue जो donations मिलता है, that is around 7,000 crores. घी का प्राइस रिव्यू just by cash यूज करते हैं. 130 किलो घी, 330 रुपए किलो. घी तो हम भी नकली यूज कर रहे हैं. और जो तिरुपति टेम्पल का जो घी होता है, that comes from Kerala, कर्नाटका फेडरेशन. तो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने सारे जो घी का जो ट्रक है उसमें GPS लोकेटर डाला. Yeah, tell me one thing. What is the general price of ghee?
starting price. नहीं, पर केजी। हाँ, starting from 700 can go up to 900. Yes. Yes. नहीं मिलेगा। अगर जो प्योरिटी की बात आप कर रहे हो ना, वो प्योरिटी 700-800 रुपए से कम पे आज की डेट में तो नहीं मिल रही। काऊ का महंगा मिलता है? नहीं। क्या बफेलो? अच्छा, टेल मी। नो सर, यू आर सेइंग इट ऑपोजिट। Cow milk has a lesser fat content, so it requires more milk to extract. हाँ भैया, इधर बैठे हुए हैं, बताओ। गाय का दूध भी महंगा होता है और घी भी महंगा होता है, क्योंकि पैकेट वाले की बात नहीं करना मैं। हाँ, गाय का दाना लेना पड़ेगा, तो गाय का सस्ता है, भैंस का महंगा। अरे सर, सप्लाई की बात है, स्टॉक में गाय ज्यादा है, भैंस कम है, उसका भैंस का महंगा होगा। नहीं, दूध का मैं मान सकता हूँ कि प्राइस वैरी कर सकता है, लेकिन घी में तो जो गाय के दूध का घी होगा वो महंगा होगा। उसका रीजन है क्योंकि काऊ मिल्क में फैट कंटेंट कम होता है। काऊ मिल्क में फैट कंटेंट कम होता है, तो उसमें ज्यादा दूध की जरूरत होती है। अच्छा, एक बात बताओ, व्हाट इज द प्राइस? चलो ठीक है, लीव। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 लीटर काऊ मिल्क? हाँ बताओ। 50 है, 60 मान ले, एवरेज 60। हाउ मच, यू नो, 1 किलो घी निकालने के लिए कितने दूध की जरूरत पड़ेगी? Any idea? हैं? सर, मेरे घर में फुल क्रीम मिल्क आता है, ठीक है। माई वाइफ यूज टू स्टोर इट फॉर द क्रीम फॉर लाइक 20-25 days एंड देन शी यूज टू वर्क ऑन इट। और मतलब 20 दिन, ये 20 से 25 लीटर दूध से 1 किलो घी घर पे निकल रहा है। प्रोफेशनली वो 15 लीटर पे मैं मान लेता हूँ कि जो प्रोसेस कर रहे होंगे, 15 लीटर दूध के क्रीम से 1 किलो घी निकल रहा है। 15 लीटर दूध का प्राइस कितना हुआ? $900। और घी कितने का बिक रहा है? पॉसिबल लग रहा है? कॉस्ट, चलो मतलब अगर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लगा देते, सब लगा देते हैं कि आपने जो है एक एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज द स्टोन्ड मिल्क दैट यू गेट, वो उसमें से क्रीम अलग करके आपको टोन्ड मिल्क दे रहे हैं। डबल टोन उसमें से पूरा ही एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो उससे क्रीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फैट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फैट को प्रोसेस कर रहे हैं, तब जाके आपको जो है घी मिल रहा है। डू यू थिंक, चलो हम बोल रहे हैं आपने बहुत एफिशिएंसी दिखा दी, 10 लीटर से आपने निकाल लिया 1 किलो घी, तो 10 लीटर भी तो 600 रुपए का हुआ। प्रोसेसिंग कहाँ गई उसकी? आप बोलोगे सर वो दूध तो बेच दिया, इसीलिए वो टोन्ड और ये चीजों को ज्यादा करते हैं क्योंकि आधी कॉस्ट उसकी बेच के निकालते हैं। मोर और लेस कोई बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है मिल्क प्रोडक्ट्स में। इसीलिए आप किसी भी जितनी ये वेबसाइट्स हैं ना, क्विक डिलीवरी और साइट्स हैं और जो एप्स हैं, इनसे कभी भी मंगा के देखो, दूध के प्रोडक्ट का कोई वो नहीं दे रहा होता डिस्काउंट। मार्केट पे चल रहा है उससे बल्कि 2 रुपए ज्यादा ले लेंगे तुमसे उसके केस में, क्योंकि वो उस पर कुछ है ही नहीं, कंपनीज के पास भी कुछ नहीं बच रहा। ठीक है सर, उसमें से उन्होंने 10 लीटर मिल्क को 50 रुपए का बेच दिया या 40 रुपए का बेच दिया, 400 रुपए वो वहां से रिकवर कर रहे हैं उसके। वरना वो अगर वो सिर्फ दूध का यूजेज के बेसिस पे किया जाए तो 1500-1600 रुपए का तो दूध लग रहा है उसमें। हाँ, वो भी डिपेंड करता है। लोकल मार्केट का घी और महंगा है, लोकल मार्केट का घी 900 से 1000 रुपए है।
जो क्लेम कर रहे हैं कि हम एक अच्छी ब्रीड को, अच्छा उसमें भी अगर इवन इफ लाइक फार्म, जो डेयरी फार्म है उसमें एक ही ब्रीड की गाय है या एक ही ब्रीड की भैंस है तो वो सस्ता है, वो महंगा है। अगर उसने ब्रीड में भी मिक्सिंग कर दी है तो फिर वो महंगा है, मतलब इट इज फॉलिंग, प्राइस कम हो जाता है। अच्छा एक और चीज़ मैंने देखी, वो जो आज कभी किसी ने उसमें डाला था सोशल मीडिया में ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट दैट बहुत सारे पूजा के घी आते हैं जिसमें लिखा होता है नॉट टू बी यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस, और लिखा उस पर घी है। अब वेजिटेबल ऑयल ही होगा, वी डोंट नो। पता है हम बैक एंड पे क्या, हमें जो सामने फ्रंट एंड पे प्रोडक्ट मिल रहा है उसका बैक एंड क्या होगा किसी को नहीं पता। आप कभी देखो कितनी कैसी भी मिठाई की बड़ी से बड़ी दुकान होगी, कभी उसके वो अंदर हाथ नहीं डालने देते हैं। बहुत रेयर, जैसे आज के टाइम पे वो फूड ब्लॉगर्स हो गए ना, हर किसी किचन में घुस जाते हैं, लेकिन आप देखो मिठाई वालों को उसमें नहीं घुसते हैं, वो घुसने ही नहीं देंगे। बहुत रेयर, एक दो आपको मिलेगा, 100 में से 2 लोग को एक्सेस मिल जाता है, वरना नहीं। ऐसा प्रोसेस होता है। फाइन, सो कमिंग बैक, हरप्पन इंपोर्ट सोर्सेस, gold was coming from Afghanistan, Iran and Kolar. Gold we imported from Afghanistan, Iran, Kolar as in Karnataka, KGF, Kolar gold fields, yes. Then copper, from Khetri mines in Rajasthan and Balochistan. कॉपर कहाँ से आ रहा था? Khetri mines in Rajasthan and another part was coming from Balochistan. Tin, Afghanistan and Iran. Tin, Afghanistan and Iran. Lapis lazuli, ये क्या होता है? हाँ, प्रेशियस स्टोन, मतलब दिस वाज द डायमंड ऑफ दैट पीरियड। लैपिस lazuli was coming from Afghanistan. Another precious stone, jade, Pamir. Then turquoise, Khorasan, ये भी स्टोन है। अच्छा, अब बताया ना देवर फैशन कॉन्शियस, तो स्टोन्स अलग अलग जगह से, ऑर्नामेंटल चीजें अलग अलग जगह से, मोस्टली आपको वही दिखेगा। Then steatite, Iran. Steatite, Iran. Bitumen, Balochistan and Mesopotamia. बिटुमिन होगा ना, IN हो, ठीक, बिटुमिन, बलूचिस्तान एंड मेसोपोटामिया। लेड, साउथ इंडिया, अच्छा, सो दिस वॉज देयर मेजर एक्टिविटीज, ट्रेड, कॉमर्स, सब बढ़िया आपने बता दिया। सील्स और ये सब स्टैंडर्डाइज था, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, बट ग्रेजुअली बाय 1300 BC
ग्रेजुअली बाय 1300 BC, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स मिलेगी. 1500 भी आता है, कहीं 1300 भी आता है, अलग अलग बुक्स में देर आर डिफरेंट डेट्स, बट लेट्स टेक द मैक्सिमम स्ट्रेच दैट वी से दैट आफ्टर almost 1000 years of the mature phase. So this mature phase lasted for around 1000 years, which include the declining phase as well. And we say that by 1300 BC, in some texts it is 1500 BC, the Indus Valley, it collapsed, and this is coincided with the advent of Aryans. So इनका decline और Aryans का जो एडवेंट है वो मोर और लेस एक साथ होता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, खासतौर पर तुम्हारे पास ऑप्शनल हिस्ट्री है. Wherever in history we don't have, conclusive evidences. Everything is based on evidences. Wherever we don't have conclusive evidences, at that stage there are multiple theories. Some will be talking about one thing, other will be talking about another thing. So there are multiple theories, which in reality all are false and all are true. है भी और नहीं भी, right? Yes and no at the same time. Because if you will say one is correct, all other will become wrong. And you cannot deny the possibility of other theories which are being given. That is, it will come not at much places, because gradually in next 300-400 years we will have we will have a recorded history where we can understand the language. So वहाँ उतनी problem नहीं होती. लेकिन दो ऐसे major evidences हैं, instances हैं, दोनों आपके सामने लिखे हैं. One is decline of Indus Valley civilization, another is arrival of Aryans. इसको लेके there are multiple theories in the market. Fine. First we'll talk about the causes of decline of Indus Valley civilization. One assumption on theory says change in climatic conditions. Says change in climatic conditions. So there's a possibility that the climatic condition changed, and that caused a decline in and ऐसी कुछ conditions हो गई जो उस जगह वो जो है वो रहने लायक ही नहीं बची. Possible है, बिल्कुल हो सकता है. Another possibilities natural calamities, that could be earthquake or flood. अच्छा, earthquake की possibility को deny कर सकते हैं. हाँ. तो structure कितने टूटे हुए मिले? भाई अर्थक्वेक अगर बड़ा होता तो, और अर्थक्वेक होता तो एक कितना बड़ा अर्थक्वेक होता? है ना. दूसरी चीज, अर्थक्वेक होता तो स्ट्रक्चर्स जो हमें मिले वही नहीं बचते, वो टूट सकते थे. हो सकता है कि उन्होंने अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बना लिए हो, वी डोंट नो दैट. शॉक प्रूफ बना लिया हो, पॉसिबल. बट हाँ, फ्लड्स इज वन थिंग दैट कैन, उसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता. फ्लड्स कैन बी वन थिंग. अनदर एस्पेक्ट, evidences shows that Indus and Saraswati may have changed their course. अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग रीजन्स थे वो ड्राइड अप होने लगे, एरिड हो गए. और क्योंकि उनका ट्रेड डिक्लाइन है, ट्रेड वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर,
तो ग्रेजुअली क्या हुआ, उनका ट्रेड जो है वो पॉसिबल डिक्लाइन होने लगा, एंड दिस मे हैव कॉज्ड इन दिस कि यहाँ के लोग जो है वो ओके एक और वो आता है क्लाइमेटिक से रिलेटेड है, दैट बाय इट इज बिलीव दैट बाय 1800 BC the temperature became colder and drier, which and a seismic event. अच्छा, seismic event की possibility को deny इस context में नहीं किया जा सकता कि the seismic events, that is the earthquakes, they may have changed the course of the river. तो जिसकी वजह से वहाँ पे नदियों का रास्ता बदल गया, जिसकी वजह से फ्लड आई होगी, और क्योंकि रास्ता बदल गया तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होंगे उस दौर के वो सारे जो हैं वो they would have gone. Fine, this is one thing. Another that was proposed by Ram Prasad Chand, Aryan invasion. So Aryan invasion, इसको multiple historians ने माना, and they said that Aryan invaded, they slaughtered this people and occupied this place. क्योंकि वो जो हमने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, that the decline of Indus Valley civilization and the advent of Aryans is more or less at the similar time. So this also there, and Mortimer Wheeler ने इस थ्योरी को या इस एस्पेक्ट को हाईलाइट किया, because he says that in Rigveda Rigveda talks about it's talking about various type of forts, it is talking about attack on walled towns, it is talking about other things which all point towards the invasion on the Aryan, or let's say the Harappan cities. Fine, this is one aspect. अच्छा, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है, फॉर एग्जांपल M.R. साहानी, जॉर्ज डील्स, इनका ये कहना है दैट फ्लड could have been the cause, but this flood was because of a human mistake. Possible कोई डैम टूट गया हो या कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया हो, एंड हाँ, that is based on this theory of George F. Deals. उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया कि yes, there was a flood, but this flood was mostly, मैंने वो मूवी देखी नहीं, मैंने उसके बस ग्लिम्स देखे हैं, so I cannot tell much about that. So possible, हाँ, there is, but this theory is do exist कि ये हुआ होगा. दूसरा is ecological imbalance. It is ecological imbalance. Fine. So environmental fine. No doubt. Many experts think that climatic change was to blame. Climatic change was to blame for the fall of Indus Valley civilization. For the fall of Indus Valley civilization. Most Harappan towns had been nearly totally abandoned, had been nearly
totally abandoned. By 1800 BC. Some scholars believe that the drying of Saraswati River, which began approximately in 1900 BC, was the primary cause of the climatic change. While many scholars believe that the Indus Valley region experienced several tectonic disturbances, which caused earthquakes and also changed courses of rivers, or dried them up. Another natural reason might be changes in patterns of rainfall. So there is a very unique. सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? When you have so many theories, combine all of them. Another theory states that a combination of interpersonal violence, infectious diseases, and climate change had played a major role in the demise of Indus Valley civilization. Okay, fine. तो इसके बाद क्या आता है?
The next is the Vedic age. This was all about Indus Valley civilization, and now let us talk about So is there a possibility that people of Indus Valley civilization after the invasion of Aryans came down to southern part of India and settled? this is the most widely accepted, because it is not something ki all of a sudden the whole population like vanished, like, so that is also I'm telling this because the type of houses and the way of worship of Lord Shiva sitting in a meditation posture and the kind of tiles, ये सब आज भी मेरे गाँव में है. possible. ये एक थ्योरी है जिसको हम मानते हैं, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट यस So Vedic age is roughly from 1500 to 500 BC. Now, it is not necessary, again, there is no strict compartmentalization that this ended and the other thing started. There was some overlapping. Fine. But before we talk about the Vedic age, the social, because the question that will come here will be from society or culture of this period. But before that, we have to understand the people who lived in this age. That is Aryans. So, Aryans, they are like semi-nomadic pastoralists. How you classify them? Semi-nomadic pastoralist. Fine. Achha, now there is a debatable question that what was the original homeland of Aryans? The debatable question is that what was the original homeland of Aryans, and there are multiple theories which talks about the theories of Aryan migration, or what we call as Aryan invasion theory. So later on, this word invasion was being removed, and the word migration was being used. So earlier we used to call it what? The theory of Aryan. Fine. Now there are numerous theories जो कि बात करते हैं about this concept. So the first theory that we talk about is, and the most accepted theory in this, is the theory of Aryan migration.
Fine. Evidences shows that they have migrated, these Aryans have migrated from the Andronovo culture, which is southern Siberia. ये कहाँ से आए? इनका जो माइग्रेशन का वो रहा, that is this is South Siberia to north of Hindu Kush. What they say that these are because उनका नेचर कैसा है या उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, they are semi-nomadic pastoralist. What do you mean by semi-nomadic pastoralist? कल्टीवेशन भी करते थे ठीक है, और ट्राइबल की तरह सेटल्ड भी नहीं थे और नोमैडिक भी नहीं थे. फाइन. something in between. जहाँ जाते थे वहाँ कल्टीवेट करते थे. कुछ दिन रुकते थे जब उस रीजन का एनिमल फीड ओवर हो जाता था, देन दे यूज्ड टू माइग्रेट, लेकिन तब तक अपने लिए वो वहीं पे कल्टीवेशन करते थे. टिल नाउ दिस इज द, अच्छा, व्हाई? बिकॉज द एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस, फायर कल्ट्स, स्पोक्ड व्हील एंड क्रिमेशन. द एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस, यहां में क्या मिल रहा है? अभी तक हमने देखा हॉर्सेस का ज्यादा यूजेज नहीं था, लेकिन आप देखोगे कि अश्व विल बी a very important animal. Horse will be a very important animal in the Vedic culture. So horses, cremation, fire cults, and spoked wheels. The next theory related to this is propounded by Max Müller, and that is the Central Asian theory. Central Asian theory by Max Müller. So they say that according to this theory, they migrated from Central Asia and European steppes. From there, they migrated to this region. Fine. And how he came up to this? इसका evidence क्या है? There are numerous similarities between the Vedas and the Zend-Avesta. Zend-Avesta is the Iranian text. Zend-Avesta is the holy text of Iranians. So, uske beech similarity, the conceptual, it is not the linguistic similarity, but it is the conceptual similarity between them. And 2018 में भी कुछ studies हुई जिसने इस view को support किया that the Aryans were. Then European theory by William Jones. European theory by William Jones. Now, this, according to this, is the same William Jones, Asiatic Society of Bengal, पढ़ा था? Is the same person, and this is, and he said that Europe is the homeland of Aryans. According to this, Europe is the homeland of Aryans, and this is based on comparative linguistic study. It's okay. This is based on comparative linguistic studies. This is based on comparative linguistic studies of Greek, Latin, German, and Sanskrit. Of Greek, Latin,
जर्मन एंड संस्कृत। विलियम जोन्स ने इसके बारे में बात की। देन इंडियन थ्योरी। इस थ्योरी, दिस वाज इंडियन थ्योरी बाय डॉक्टर संपूर्णानंद एंड AC दास। उन्होंने कहा नहीं, यूरोप से कुछ नहीं है, दे ऑल केम फ्रॉम, दे आर ऑल इंडिजिनस पीपल बेस्ड ऑन द sacrificial rituals and the geographical data which is found in the Rig Veda. So ये किस पे based है? This is on the rituals and geographical data which is found in Rig Veda. There is another theory which is the Arctic region theory. By Bal Gangadhar Tilak. Arctic region theory by Bal Gangadhar Tilak, and he said that northern Arctic is the homeland of Aryans. Northern Arctic. Why? Because he point out to Vedas, which speaks about 6 months of long days and 6 months of long nights. ये कहाँ है? आर्कटिक सर्कल में ऊपर की तरफ है। आर्कटिक सर्कल ही हुआ ना 66 डिग्री नॉर्थ से ऊपर। तो एक थ्योरी है। अच्छा, देयर इज वन मोर थ्योरी, नॉट वेरी वाइडली एक्सेप्टेड बट पता होना चाहिए। तिब्बत थ्योरी बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा नहीं, द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ देम इज तिब्बत। कोई एज सच कॉन्क्रीट इसलिए इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल इज द थ्योरी ऑफ आयरन। अरे यार, आयरन एज पढ़ानी है, वो दिमाग में वो चल रहा है। इज दी यस आर्यन माइग्रेशन। नाउ व्हाट हैपन? ये हो गया। तो वही है, जब इतनी सारी थ्योरी जब समझ में आ रही हो तो एक काम करो, सबको मिला दो। बेस्ट थ्योरी विच इज द फर्स्ट थ्योरी दैट वी टॉक्ड अबाउट द आर्यन माइग्रेशन। विच वन? नहीं, रीजन्स आर डिफरेंट। Southern Siberia is not the Arctic. So how this happened? Possible. Fine, let's say this is India. Okay, let's say this is India. Then this region is Tibet region. Fine. This is present day Pakistan, अफगानिस्तान, ईरान वाला जो पर्शिया का जो रीजन है वो। फाइन। अबव दिस इज ऑल योर सेंट्रल एशिया, CIS, दैट रीजन। फाइन। एंड हियर यू कैन से दिस टर्की एंड अदर रीजन। फाइन। अबव दिस इज ऑल योर रशिया। फाइन। सो व्हाट दे हैव सेड, और ये इधर आपका वेस्टर्न यूरोप आ जाता है। फाइन। ये आपका मिडिल ईस्ट आ गया, ये आपका अफ्रीका आ गया। ओके, जस्ट सो दिस इज लेट्स से द यूरोपियन स्टेपीज।
यूरोपियन ग्रासलैंड्स, साइबेरिया। इनका कहना है कि माइग्रेशन ऐसे हुआ। So people from European steppes, they started migrating, let's say in this region, and they came like this here. कुछ वेव यहाँ से आई, ये सब यहाँ पे मिल गई. Fine, that is the Iranian agriculture, the Persian agricultural region, and from there they migrated to. Possible is this through बलूचिस्तान होते हुए वो ऊपर से हिंदू कुश क्रॉस नहीं हो रहा था. खैबर और पासेस उतने इफेक्टिव नहीं थे. So what they did, they used this Iran से बलूचिस्तान मतलब आप कहाँ आ गए, आप इंडस वैली. यस, एक और उसमें से एक माइनर वेव जो है वो ऊपर से भी आया, तो दोनों रास्तों से ही आया. फाइन. सो दिस इज the basic theory of Aryan migration, where we say that okay, कुछ इधर से आए, कुछ इधर से आए. ईरान का जो या जो पर्शियन रीजन का जो एग्रीकल्चरल लैंड था, ये वहाँ पे वेव, और ये एक साथ नहीं आए. They came in batches which is respect to 200 to 300 years. They started. It's not that एक बार में. Yes. If it would have been an invasion, then हो भी सकता है. क्यों नहीं हो सकता? ग्रीक्स ने नहीं किया गया, अलेक्जेंडर ने भी तो यही किया, पहले एक गया फिर गया. सो कई बार इन्वेजन भी जो है ग्रेजुअल, मुस्लिम इन्वेजन वो भी बैचेस में हुआ. पहले अरब्स ने किया सिंध और मुल्तान, फिर कंट्रोल किया सिंध मुल्तान, फिर अगला बैच आया, उसने जो है और आगे गया, फिर वो और आगे गया, बंगाल तक गया, फिर खिलजी गया साउथ इंडिया तक. दैट इज ऑल्सो कि ग्रेजुअली जो है वो बैचेस में इन्वेजन होता है. पॉसिबिलिटी दोनों की है और दोनों को डिनाई नहीं कर सकते. फाइन. Okay. Now, if we talk about so ये clear हुआ? Okay. Now, this whole period of Vedic age, we divide it into two, and that is for our understanding only. मतलब ये क्लासिफिकेशन वैदिक लोगों ने नहीं किया था, आर्यंस ने नहीं किया था, ये हमने किया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दैट इज अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. अर्ली वैदिक (1500 to 1000 BC), लेटर वैदिक फाइन. और ये जो 1000 BC है, that is the discovery of iron. That is the discovery of. अच्छा, when we talk about the early Vedic, ये जिस ज्योग्राफिकल रीजन में, अगर हम ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करें कि ये कहाँ रह रहे थे, they lived in a region which was called as सप्त सिंधु. अच्छा, बिकॉज ये ईरान से आए थे और पर्शियन लैंग्वेज में द प्रोनाउंसिएशन ऑफ स इज ह. सो इन प्लेस ऑफ स इट्स ह. सो हाउ दिस विल बी कॉल्ड एज हप्त हिंदू. सो पर्शियन जो जबान है उसमें ये सप्त सिंधु क्या हो जाता है? हप्त हिंदू. फाइन. And Sapta Sindhu, why? Because 7 rivers. This was a land of 7 rivers. कौन सी? इंडस, फिर झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और
चिनाब को भूल जाओ, चिनाब एंड सरस्वती। अच्छा, इस दौर में इनके नाम अलग अलग थे, दे आर डिफरेंट नेम। लाइक इंडस वॉज कॉल्ड एज सिंधु, इंडस वॉज कॉल्ड एज सिंधु, झेलम वॉज कॉल्ड एज वितास्ता, झेलम was called as Vitasta. Then what we have written, Ravi. Ravi was called as Parushini. Ravi was called as Parushini. Then Byas was called as Bipasa. Byas was called as Bipasa. फिर क्या है, सतलज वॉज कॉल्ड एज शतुद्री, ब्यास सतलज वॉज कॉल्ड एज शतुद्री, एंड चिनाब वॉज कॉल्ड एज असिकनी, सरस्वती वॉज सरस्वती, घग्गर सरस्वती, इट इज द सेम। ठीक है, इन दिस जो ऋग्वेदिक से हमें मेंशन मिलता है, इंडस इज द मोस्ट मेंशन्ड रिवर एंड सरस्वती इज द मोस्ट होली रिवर। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मेंशन किसका है, इंडस का है, सिंधु का है, और सरस्वती को सबसे होली रिवर माना गया है। यहाँ पर हिमालय और गंगा का कोई भी मेंशन नहीं है। एंड दिस होल सरस्वती वैली इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड एज ब्रह्मव्रत। दिस होल सरस्वती वैली वाज कॉल्ड एज ब्रह्मव्रत। ठीक है, तो पहले ही कहाँ थे आप, ये कह सकते हो पंजाब और पाकिस्तान वाला जो बेल्ट है, ये वहाँ पे इन नदियों के आसपास ये रह रहे थे। लेकिन 1000 AD में क्या होता है, 1000 BC में क्या होता है, आयरन डिस्क की डिस्कवरी होती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा द एबिलिटी टू क्लियर फॉरेस्ट्स, ये बहुत अच्छी हो जाती है, द एबिलिटी टू क्लियर फॉरेस्ट। और फिर ये बीच का जो रीजन था उसको क्लियर करके इस तरफ आते हैं, एंड मतलब दे क्रॉस, और यहाँ पर they became, so in the later Vedic period after discovery of they became familiar with the Gangetic Valley, the Himalayas and all. और उसके बाद later Vedic period में this northern region was referred as Aryavrat. In the later Vedic period, जब ये गंगा और के प्लेन्स की तरफ आए, बीच का हिस्सा क्लियर करके, फाइन, सो द गंगा वैली मोस्टली कहाँ सेटल हुए, ये गंगा के आसपास सेटल हुआ, इन द गंगा वैली इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड एज आर्यव्रत। तो पंजाब, हरियाणा, अफगानिस्तान तक का जो था वो अर्ली वैदिक में था, और जो इस तरफ का है गंगा वैली वाला जो रीजन है वो लेटर वैदिक का है, ये ध्यान रखना। सो इसी के बाद जो है आपको हिमालय और विंध्या माउंटेन्स के बारे का मेंशन मिलता है। हिमालय के बारे में और गंगा के बारे में इस यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में कोई मेंशन नहीं था। सर दक्षिण का क्या होगा, पूछा नहीं तुमने, दक्षिण का क्या हुआ, आएगा, दक्षिण भी आएगा, डोंट वरी, फाइन। लेट्स स्टॉप हियर, अगला इट इज अ फाइन। ओहो, अब इतना भी हैवी नहीं पढ़ाया मैंने कि जो है स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ जाए। अच्छा, आर्यन वर्ड जो है, इट इज टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड आर्य, विच मीन्स द मोस्ट नोबल। आर्या
Fine. Or you can say someone which is not ordinary. Something which is not ordinary. taken from संस्कृत वर्ड, संस्कृत या संस्कृत ही है अभी सब कुछ जो है संस्कृत है. So tomorrow we will do with early Vedic and later Vedic period, and then we'll move on to the rise of Mahajanpadas, the rise of Magad. ठीक है. मगध पढ़ेंगे, मगध पे एक जगह जाके रुकेंगे, फिर हॉल्ट लेके बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे, देन मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत्स, अरब एंड टर्किश इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर बहामनी किंगडम, मुगल एम्पायर, भक्ति सूफी मूवमेंट, कहानी खत्म. हाँ, फाइन. So we'll continue this tomorrow. Thank you so much, everyone.